Exercise C, question number 5, differentiation. First sub question, that is, if log of x plus y equals to log of xy plus p constant, then we show that dy by dx is minus 1 on x. So log of plus y equal to log xy. You can write it as log x log y log x log y plus derivative. Now differentiate it with respect to, so we differentiate it with respect to x. Derivative of this will be 1 upon x plus y, 1 upon x plus y, derivative of x plus y. Derivative of x 1 and derivative of y is y by dx. Then right hand side, derivative of log x 1 upon x, derivative of log y is 1 upon y into dy by dx, and p is constant, derivative is 0. To simplify, I will simplify it again. 1 upon x plus y plus 1 upon x plus y dy by dx equal to 1 upon x plus 1 upon y dy by dx. Now we will collect dy by dx term. This dy by dx term we will collect. So after collecting dy by dx term, 1 upon x plus y minus 1 upon y into dy by dx, that is equal to 1 by x 1 upon x plus y. So again we simplify, LCM is y into x plus y into dy by dx. Here y minus x plus y, so minus x and minus y. Right hand side also x into x plus y and x plus y minus x, so that this x is getting cancelled over here. ये x यहाँ पे y और y कैंसिल होगा, या फिर x और x कैंसिल होगा. This x plus y और x plus y cancel होगा, and we'll be getting here minus x upon y into dy by dx. The right hand side y upon x. So we are interested to get dy by dx. dy by dx find करना है. So therefore dy by dx is equal to dy by equal to y will be, will take cross multiplication, y square, x will be in denominator, x square. Yes, fine. This is required to show here dy by dx minus y upon x. The second sub question, if log of this is equal to 2 and so that this dy by dx is minus 99 x square upon 101 y square. So we are using here, यहाँ पे हमें यूज करना है कि log of n to the base a equal to x, then we use here this property n is equal to a raised to power x. यहाँ पे n है, ये a है और ये x है. So what you will get,
therefore we are getting here यहाँ पे x cube minus y cube upon x cube plus y cube, that will be equal to 10 raised to power 2. 10 raised to power 2 is great. तो अभी हमें यहाँ पे यूज करना है कंपोनेंडो डिविडेंडो. कंपोनेंडो डिविडेंडो दैट मीन्स x upon y is equal to a upon b is equal to c upon d, implies a plus b upon a minus b equal to c plus d upon c minus d. So let us use here componendo dividendo, and we will get here x cube minus y cube plus x cube plus y cube, that is denominator, upon x cube minus y cube minus x cube plus y cube. Yes, right hand side is 100 plus 1 upon 100 minus 1. Simplify it. So we will simplify. Y cube is getting cancelled over here. So x cube or x cube cancel होगा. So what we will get 2x cube upon minus 2y cube. Right hand side is 101 190. Again this 2 is getting cancelled. यहाँ पे 2 cancel होगा. So x cube is equal to minus of 101 199 y cube होगा. इसको डिफरेंशिएट करना है. So we'll now differentiate it. So यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है. Differentiating with respect to x, differentiating with x. So derivative of x cube will become 3x square minus 101 upon 99 3y square into dy by dx. 3y square into dy by dx. So यहाँ पे हमें dy by dx फाइंड करना है. ये 3 कैंसिल होगा. Now dy by dx will be equal to what? Therefore dy by dx is equal to, dy by dx will be equal to minus 99 101. यहाँ पे न्यूमरेटर में x स्क्वायर है इस बेटा, और ये डिनोमिनेटर में y क्यूब हो. ये y क्यूब डिनोमिनेटर, y स्क्वायर विल बी डिनोमिनेटर में. Here this y square will be denominator. Once again ये x square है यहाँ पे न्यूमरेटर में, और ये y square will be the denominator. So that is required to show. Okay, so that dy by dx is minus 99x square upon 101 y square. Let us start this third sub question. If log of to the power 4 plus y to the power 4 upon base 5 is equal to 2, then show that this. यहाँ पे this will be equals to what? 5 raised to power 2 by using laws of logarithm. Therefore we get here x to the power 4 plus y to the power 4 upon x raised to power 4 minus y raised to power 4, that is equal to 5 raised to power 2. What is this? 32. Okay, so we are using here log of n to the base a is equal to x. This gives n is equal to what? a raised to power, यहाँ पे n है, ये a है और ये x है. So that is equal to upon 1. Then
sorry, here is this 5 square, so that will be equals to what, 25. Now that is upon 1. Here differentiating, so we use here componendo dividendo, x to the power 4 plus y to the power 4 plus x raised to power 4 minus y raised to power 4 upon x raised to power 4 plus y raised to power 4 minus x raised to power 4 minus y raised to power 4, that is equals to 25 plus 1. Here 25 minus 1. So what is getting cancel, यहाँ पे y to the power 4 cancel होता है और x to the power 4 cancel होता है, and this gives us 26 upon 24. तो आगे रिड्यूस करेंगे 13 upon 12 आएगा, यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड इज 13 upon 12. अभी here is 2x to the power 4 is left, 2 y to the power 4 is required, here left. आगे 13 upon 12, 13 upon 12. Here 2 is getting again cancel, ये 2 cancel होगा और cross multiplication will give us x to the power 4 is equal to 13 upon 12 to y is power 4. इसको आप differentiate करेंगे, will be differentiating it with respect to x. तो इसका differentiation आएगा 4x cube differentiating 13 upon 12 4y cube dy by dx. नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है, here 4 is getting cancel, फिर आपको dy by dx फाइंड करना है. यस, ये हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, ये न्यूमरेटर में आएगा, therefore dy by dx is required over here, which is 12 upon y cube. Yes, done. 12 upon 30, ये नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है, x cube upon y cube. Done. Now we'll do next question, that is question number 4. Question number 4 is e raised to power x plus e raised to power y x plus e raised to power y equal to e raised to power x plus y. Then we show that dy by dx equal to, here dy by dx is equal to minus of e raised to power y minus. So we'll show this. What is given here, यहाँ पे क्या दिया है, e raised to power x plus e raised to power y is equal to e raised to power x plus y, differentiating it with respect to x. तो इसका डेरिवेटिव आएगा e raised to power x, e raised to power y का डेरिवेटिव आएगा e raised to power y dy by dx. यहाँ पे e raised to power x plus y to derivative of x plus y. तो आगे आप सॉल्व करेंगे इसको, e raised to power x plus y, derivative of x is 1 plus derivative of y dy by dx to x.
Now this is e raised to power x plus e raised to power y into dy by dx is equal to e raised to power x plus y plus e raised to power x plus y dy by dx. Now e raised to power x plus y, here this e raised to power x plus y is what, e raised to power x plus e raised to power y, यहीं पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इंस्टेड ऑफ सी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो यही स्टेप पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. So what we'll get, e raised to power x e raised to power y to dy by dx equal to राइट हैंड साइड क्या है, e raised to power x प्लस पावर y, ये राइट हैंड साइड है. इन प्लेस ऑफ दिस e raised to power x plus y ये लिखना है फ्रॉम 1 and into 1 plus dy by dx. तो आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको. Therefore e raised to power x plus e raised to power y dy by dx equal to e raised to power x plus y e raised to power x plus e raised to power y into 1 or e raised to power x plus e raised to power y to dy by dx. तो दिस e raised to power x ये कैंसिल होगा यहाँ पे e raised to power x, और यहाँ पे yes बच्चों, what is left over here, e raised to power y into dy by dx is equal to e raised to power y plus ये भी मल्टीप्लाई होगा e raised to power x into dy by dx plus e raised to power y into dy by dx. कुछ कैंसिल हो सकता है यहाँ पे, यस ये कैंसिल हो, e raised to power y into dy by dx कैंसिल, और इसको हम राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं. माइनस e raised to power y इक्वल टू e raised to power x dy by dx yes. Now this taking denominator, therefore dy by dx will be equal to minus e raised to power y upon e raised to power x. तो आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको, a raised to power m upon a raised to power n will give us a raised to power n minus n, ये माइनस साइन एज इट इज है, e raised to power y आएगा माइनस x, a raised to power m upon a raised to power n, यही शो करना है, माइनस ऑफ e raised to power y minus x dy by dx. Yes, we'll do now next question. यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज फिफ्थ वन, साइन इनवर्स ऑफ, do this question, sine inverse of, what is your sixth question, number 6 is this, sine inverse of x to the power 5. Yes, fifth question, if sine inverse of x to the power 5 minus y to the power 5 upon same plus साइन here is pi by 6. तो हमें क्या करना है, इन्वर्ट करना है इसको, ये इन्वर्ट है तो अभी साइन ऑफ पाई बाय 6 में, therefore x to the power 5 minus y to the power 5 upon
x raised to power 5 plus y raised to power 5, that is equal to sine of pi by 6. And what is sine of pi by 6? 1 by 2, sin 30 डिग्री. अब इसको कंपोनेंट को डिविडेंड वापस से करते हैं, x टू द पावर 5 माइनस वाई टू द पावर 5 प्लस x रेज टू पावर 5 प्लस y रेज टू पावर 5 अपॉन x रेज टू पावर 5 माइनस y रेज टू पावर 5 माइनस x रेज टू पावर 5 प्लस y रेज टू पावर 5. 1 plus 2 upon 1 minus 2. So this gives us 3 upon minus 1, that is minus 3. यहाँ पे y to the power 5 is getting cancelled, यहाँ पे x to the power 5 is getting cancelled, and finally you will be getting here, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 2x to the power 5 upon minus 2y to the power 5 is equal to minus. हाँ, so ये 2 कैंसिल होगा इस बच्चे, 2 कैंसिल होगा, नेगेटिव साइन आल्सो कैंसिल होगा, एंड फाइनली विल बी गेटिंग हियर व्हाट विल गेट x to the power 5 equal to 3 times y to the power 5. अभी we are very close to the answer, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x किया तो ये आएगा 5x टू द पावर 4 और 3 एज इज रखो, यहाँ पे डेरिवेटिव इज 5y टू द पावर 4 इंटू dy बाय dx. हाँ, सो दिस 5 इज गेटिंग कैंसल, ये 5 कैंसिल होगा, और फाइनली विल बी गेटिंग हियर dy बाय dx equal to x to the power 4 upon dy to the power 10. Required question. Last example है, last next examples we'll do in the next video. इस वीडियो का ही लास्ट एग्जाम्पल है. If x to the power y is equal to e raised to power x minus y, then show that this. So very important question ये. Okay, sixth question. अभी यहाँ पे हम log लेते हैं, तो log लेने पर क्या आएगा बेटा, log x power y is equal to log e raised to power x minus y. तो इसका log y log x आएगा और राइट हैंड साइड आएगा देखो x माइनस वाई इंटू लॉग, इंटू वॉट लॉग, बट लॉग इज वॉट 1, यहाँ पे आएगा x माइनस वाई. अभी क्या करते हैं कि y जो है लेफ्ट हैंड साइड में लेना है, y अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं y log x प्लस y आएगा, और राइट हैंड साइड में आएगा खाली x. यहाँ से हम y कॉमन लेते हैं, log ऑफ प्लस 1 इक्वल टू x. फिर क्या करना है, therefore y इज इक्वल टू व्हाट, x अपॉन 1 प्लस log x, ठीक है ना. u अपॉन p से डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, ओके, इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx अपॉन v स्क्वायर आता है ना, 1 प्लस लॉग ऑफ x फुल स्क्वायर, 1 प्लस लॉग ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x 1 माइनस 2, derivative of 1 plus log x, derivative of 1 is 0, derivative of log x 1 by, okay. हाँ, now यहाँ पे भी ये x कैंसिल होगा, ये x न्यूमरेटर में है और x डिनोमिनेटर में है, तो व्हाट इज गेटिंग ओवर हियर dy by dx क्या मिलेगा, अच्छा dy by 2
equal to 1 plus log x minus 1 upon 1 plus log x whole square. ये 1 और ये 1 कैंसिल होता है and finally you'll be getting here, so log x upon dy by dx is what? Log x upon 1 plus log x whole square which is required to show. यहाँ पे हमें यही शो. So derivative of dy by dx is log x upon 1 plus log x whole square. Okay, so here in this video we did up to question number 6. So thank you for watching this video. Next video में हम इसके आगे के questions करेंगे. So thank you students.